I'm not being romantic here, but this phone was my love at first sight, and believe me, it's not just about the looks, it's about the specifications and intelligence as well. Yeah, I'm down for that kind of stuff as well. See, before buying the Motorola Edge 60 Pro, I researched a lot about other smartphones, जैसे कि Vivo, Oppo, Nothing 3A especially. But after considering the specifications along with the looks, मैंने ये स्मार्टफोन खरीदा. But as you know, I don't focus just on the specs. मेरे लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. सारे पैसे एक्सपीरियंस के. I'll talk straight to the point. If you have 30k or have a budget around that, and if your focus is on getting a good camera performance, display and a premium in-hand feel, तो go for this smartphone, Motorola Edge 60 Pro. Another thing is gaming. I have not played any game on it yet, but BGMI आराम से चल जाएगा. You guys don't have to worry about it. Cons मेजर नहीं है. Compared to pros, cons इतने है ही नहीं. 4K 60 FPS नहीं है. But you can use Gcam to record the videos. 120 Hz refresh rate आता है डिस्प्ले में, which was previously 144 Hz. But you won't even notice the change. कोई फर्क नहीं पड़ता. See, main ultimate चीज है, लिस्ट आउट कर रहा हूँ इस फोन की. If this impresses you, you should buy this smartphone. Otherwise, it's your choice. 1.5K true color quad curved display, 50 megapixel Sony LYT700C plus 50 megapixel ultra wide macro lens plus 50x AI super zoom, 10x tak. This is okay, but you should also consider this as a part of the specs. 4500 nits brightness, up to 12 GB LPDDR5X जो previously Moto Edge 50 Pro में LPDDR4X RAM था. So this is an upgrade. Along with its segments, leading vapor chamber delivers smoother experience. MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर आता है जो 1.5 मिलियन प्लस Antutu स्कोर दे रहा है अभी. 256 GB UFS 4.0 का स्टोरेज है एंड कूलिंग चैम्बर फॉर लिमिटलेस गेमिंग एक्सपीरियंस. बट बात यहां तक खत्म नहीं होती. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोटिस, दैट फ्रॉम विच फोन यू आर अपग्रेडिंग टू. अगर आप आईफोन या सैमसंग प्रीमियम सीरीज से इफ यू आर अपग्रेडिंग द फोन टू H60 Pro, आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा. ऑफ कोर्स दिस फोन हैज चेंज्ड अ लॉट. अगर आप कंपैरिजन करोगे Moto Edge 50 Pro से Moto Edge 60 Pro की, देन यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस. अपग्रेडेशन हो रहा है. बट अगर आप प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन से देन यू आर बाइंग दिस Moto Edge 60 Pro, तो इतना डिफरेंस आपको नहीं लगेगा. मतलब अगर आप पहले आईफोन यूजर थे एंड देन यू स्विच टू Moto Edge 60 Pro, तो फिर आपका एक्सपीरियंस एवरेज ही रहेगा. सी, आई हैव यूज्ड Motorola फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरे पास था G62 which is around 11,000 rupees and it had an average display, camera, battery and performance. कैमरा उसका अच्छा था. It was not that bad, but night vision 50x वो सब चीजें इसमें नहीं थी. तो उसके बाद ये फोन ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स एन अपग्रेड. पर अगर आप किसी अबो एवरेज फोन से Edge 60 Pro पे आ जाओगे तो एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज लग सकता है. एनीवेज, एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट. सो कई सारे सैमसंग इवन नथिंग फोन्स के कैमरास भी Moto Edge 60 Pro जितने ऑप्टिमाइज्ड नहीं है. So definitely this phone is worth considering the price. However, for me, सारे पैसे तो experience के ही है. So I would like to conclude with a positive note. The Edge 60 Pro is definitely worth considering if you are planning to buy a new phone for yourself or a family member, because Motorola has seriously done a brilliant job this time in all the important aspects: camera, display, battery and performance. So take my word and go for it.